Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I have with me back again Major General Harsha Kakar, जो हमको बताएंगे यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। कभी हम इमरान खान को छोड़ने की बात होती है, कभी उसको हॉस्पिटल में डाल देते हैं, कभी उसको क्या आज शाह महमूद कुरैशी की छोड़ने की बात होती है, फिर धक्के मार के उसको वैन में डाल के ले जाते हैं। आसिम मुनीर बैठा है यूएसए में। व्हाट इज हैपनिंग है? सो लेट्स ट्राई एंड मेक सम सेंस। थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। और पाकिस्तान कुछ कोशिश तो कर रहा है, हमारे साथ भी रजौरी में भी चीजें हुई हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का ड्रोन अटैक में भी हाथ है। सर का भी ओपिनियन उसमें लेते हैं। सो आइए देखते हैं आज क्या सर बोलते हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू आडी। सर पहले ये बताओ व्हाट्स हैपनिंग विद इमरान खान। ये कभी आई मीन लास्ट वीक तो था, उसको बेल मिल गई एक केस के अंदर, जो सबसे गंदा केस था उसके अंदर बेल मिल गई। अब आप बोल रहे हो वो हॉस्पिटल में बैठा है। शाह महमूद कुरैशी बाहर निकलता है पेपर शेपर। बट वन थिंग यू मस्ट नोटिस, शाह महमूद कुरैशी का स्कार्फ वाज वेरी वेल टाइड। आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट दैट, एकदम बढ़िया तरह से, नो दैट वन डिप इन द सेंटर एंड दैट 1.5 डिप टाई था। वेल डन। एंड उसी स्कार्फ के साथ उसको खींच के लेके गए एंड दे पुट हिम इन द डब्बा एंड टुक हिम अवे। सो क्या आप क्या सेंस बनाते हैं इन चीजों का? इन पाकिस्तान व्हेन द माइटी फॉल, वो ऐसे गिरते हैं कि पता भी नहीं लगता। कुरैशी एक टाइम फॉरेन मिनिस्टर था। द वे ही स्पोक, द वे ही रैटेड, जैसे वो बोल रहे थे वी विल सॉर्ट आउट इंडिया, ये क्या वो क्या। टुडे ही इज लिटरली बेगिंग कि मेरे पास रिलीज ऑर्डर है, यू कांट अरेस्ट मी। एंड इन फैक्ट ही वाज ट्रीटेड वर्स देन वी ट्रीट स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया जब उनको गाड़ी में डालते हैं ले जाने के लिए। जैसे धक्का मारा, जैसे खींचा, जैसे पुश किया, अ ट्रीटमेंट टू एन एक्स फॉरेन मिनिस्टर। फिर आज रूमर्स चल रहे थे सोशल मीडिया में बहुत है, पाकिस्तान प्रेस ने कहीं मेंशन नहीं किया, दैट इमरान खान वाज बीटन बाय जेल अथॉरिटीज और हॉस्पिटल में एडमिट है। अगेन कंफर्म करना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट्स मिसिंग फ्रॉम पाक मीडिया, पर सोशल मीडिया में अगर आया है देन देयर हैज टू बी सम ट्रुथ, क्योंकि रिलीज उसका पीटीआई ही करेगा, चाहे ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर पे नहीं डाला है। सो बहुत कुछ हो रहा है। इनफैक्ट द इंटेंशन तो बहुत क्लियर है। देयर इज नो वे इमरान खान एंड कुरैशी विल फाइट इलेक्शंस। जहां से भी नाम डाला है दे बीन बैंड फॉर इलेक्शंस, उनका रिजेक्ट होगा, इलेक्शन से पहले निकलेंगे नहीं। इमरान को बहुत हिंट मिली है कि आप भी एमआरओ ले लो, चले जाओ बाहर, पर ही वांट्स टू शो आई एम किंग खान, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई एम इमरान खान, आई विल स्टे वेयर आई एम, चाहे जेल में रखो। कब तक, कब तक ये रहेगा? पाकिस्तान डीप स्टेट कंट्रोल्स द कंट्री। आसिम मुनीर डिसीजन लेता है, केयरटेकर पीएम कुछ कर नहीं सकता। नवाज शरीफ कैन नॉट टैम्पर विद द आर्मी, तीनों बार उसको आर्मी चीफ निकाल चुका है। फोर्थ टाइम ही वुडंट वांट टू रिस्क द सेम। आर्मी एक तरफ चलेगी, नवाज शरीफ विल सिंग द सेम ट्यून, देयर इज नथिंग दैट विल हैपन। और आसिम मुनीर अब यूएस से वापस आया है, जो उसको यूएस बोलेगा वही करेगा, ही डजंट हैव मच चॉइस। अब उसको यूएस का सपोर्ट अब चाहिए एट दिस टाइम, खास तौर पे इफ यू लुक एट द वे थिंग्स आर मूविंग। अब जो अटैक्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, ही हैज नो चॉइस बट टू डू अ काउंटर बॉर्डर स्ट्राइक। अगर वो नहीं करेगा, उसकी बदनामी हो रही है पाक आर्मी की, कैसे अवॉइड करेगा? और अगर काउंटर बॉर्डर स्ट्राइक करना है, द अफगान्स विल नॉट कीप क्वाइट। अब यूएस के पास गया रिक्वेस्ट लेने के लिए कि आई वांट टू डू दिस। माय अंडरस्टैंडिंग इज यूएस ने बोला होगा होल्ड ऑन, दो वॉर्स तो वैसे ही चल रही है, रशिया यूक्रेन, इधर इजराइल हमास, और अब तीसरा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान, इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। एंड लाइक राइटली सेड, पाकिस्तान इज सपोर्टिंग द आईएसकेपी जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, अफगानिस्तान इज सपोर्टिंग द टीटीपी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब कहानी क्या है? बोथ साइड्स आर सपोर्टिंग प्रॉक्सीज, अपनी तरफ से कोई लड़ने को तैयार नहीं है, प्रॉक्सी सपोर्ट कर रहा है। आईएसकेपी अफगानिस्तान में ज्यादा कर नहीं सकता, but TTP can create hell in पाकिस्तान। पंजाब तक पहुंच गए हैं,
अब रिसेंटली उन्होंने द सिंधीज अटैक द क्रिश्चियंस इन पंजाब. अच्छा, अब द टीटीपी इज अटैकिंग द पाकिस्तान आर्मी और बाकी लोगों को विद इन पाकिस्तान. वेयर इज द स्टेट हेडिंग? कहां तक कंट्रोल में आएगा? इलेक्शंस आने हैं फरवरी में. इलेक्शंस करो ना करो, नवाज शरीफ तो पीएम है ही है. तो व्हाई डू दे वांट टू वेस्ट मनी जब इनके पास पैसा ही नहीं है कि इलेक्शंस करके नवाज शरीफ को इलेक्ट करो? उससे अच्छा बिना पैसे खर्च किए हुए नवाज शरीफ को अपॉइंट कर दो. और कोई बंदा तो है ही नहीं. बिलावल भुट्टो एकदम चुप है. यू फाइंड नथिंग, नो मेजर कमेंट्स फ्रॉम बिलावल, क्योंकि उसको बता दिया गया है कि भाई अब तेरा टाइम है नहीं, यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू बी द पाक पीएम, तो अभी चुप बैठो. फजल इज सिटिंग क्वाइट, किसी का मुंह नहीं खुल रहा. सो इट्स अंडरस्टूड नवाज आ रहा है. अब इतने $1,000 खर्च करेंगे इलेक्शंस होल्ड करने के लिए, ओनली टू रिग इट. उसे अच्छा एक दिन वैसे ही कर लो अनाउंसमेंट. बट देन दैट इज पाकिस्तान. अब जब अब वो नवाज शरीफ कब तक रहेगा वो भी नहीं पता, क्योंकि लाइक किसी को जैसे नहीं पता. माइटी या फॉलिंग. अब इमरान गिरा है, कुरैशी को देखो क्या ट्रीटमेंट है. नवाज पहले जेल में रह चुका है, और जब नवाज जेल में था तो इमरान खान वाज ग्लोटिंग. अब इमरान खान जेल में है, जब नवाज पीएम बनेगा वो ग्लोट करेगा. तो पाकिस्तान में यही तो कहानी है. पर इतना है कि एट द एंड ऑफ द डे जनरल्स ही हैं जो पैसा बनाते हैं, जो यूके यूएस में घर बनाते हैं. आम आदमी तो वही सफर करता है. ही कैन नीदर अफोर्ड सब्जी, नॉर कैन ही अफोर्ड व्हीट, नॉर कैन ही अफोर्ड ब्रेड. बट दैट इज पाकिस्तान फॉर यू. चने के झाड़ पे और चढ़ा रखा है सर आम आदमी को. ये हालत है. पैसे आ जाएंगे, 25 अरब आ जाएंगे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा. समझ नहीं आता यार, कहाँ से आप ड्रीम्स लेके आते हो एंड आएगा चढ़ाई कहां जा रहे से? हो. नोबडी. आजकल फ्री ब्रेकफास्ट तो कहीं है नहीं. अगर कोई कुछ देगा तो ही विल वांट समथिंग इन रिटर्न. आपके पास है क्या रिटर्न में देने के लिए? एक कोई मौलाना था जिसने बोला था कि हम कुत्ते एक्सपोर्ट करेंगे. कोई कहता था डोंकीज एक्सपोर्ट करो. आपके पास है क्या देने के लिए? देयर इज नथिंग लेफ्ट. इंडस्ट्री खत्म हो गई है. हाउ लॉन्ग कैन अ कंट्री लिव ऑन आर्म्स? और कब तक लोग सपोर्ट करेंगे? मैं जो इंटरेस्टिंग चीज सर, ये चीज मेरा भी एक मानना था कि ये गया था वहां पर बोलने के लिए कि साहब मैं जरा कुछ यू नो केपी में कुछ करता हूँ यार, नहीं तो ये हालत खराब हो जाएगी मेरी. एंड वी नो ये आईएसकेपी तो इट्स पार्ट ऑफ द आईएसआई. एक आर्टिकल निकला था, उसमें 3-4 ऑफिसर्स के नाम भी आए थे कि ये लोग संभाल रहे हैं. ये तो पुरानी कहानी है कि आईएसकेपी को पाकिस्तानी आर्मी रखती है एज अ बुलवर्क अगेंस्ट द तालिबान इन अफगानिस्तान. कहीं ना कहीं सर, और जिसके साथ इसकी मीटिंग हुई, विक्टोरिया न्यूलैंड, उससे सबके एंटेना खड़े हो गए. एंड दूसरा चीज है सर, अगर वो फोटो नहीं चाहते ये निकालनी तो नहीं आती, तो वो भी एक पार्ट ऑफ मैसेजिंग थी. क्या मैसेज था सर यहाँ से? देखो, सी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. फर्स्ट मैसेज आई टोल्ड यू, पाकिस्तान वांट्स टू गो अक्रॉस द बॉर्डर इनटू अफगानिस्तान. हम्म. कोई ऑप्शन है नहीं. एंड इफ दे गो अक्रॉस द बॉर्डर दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल. ऑल्टरनेटिवली कह रहे हैं यूएस को अप्लाई प्रेशर ऑन अफगानिस्तान कि भाई इनको बोलो थ्रू द कतार ऑफिस कि टू स्टॉप सपोर्टिंग द टीटीपी. वो हो नहीं सकता. द सेकंड मैसेज which is quite possible is the election of Nawaz Sharif as the next PM. वो अप्रूवल अप्रूवल. यूएस से आ. द थर्ड मैसेज खास तौर पे जहां पे नोलैंड वाज इन्वॉल्व्ड is possibly involving India. See, if you look at it, forget about the terrorist groups. I'll come, मैं उस पे बाद में आऊंगा. Take the Khalistan movement. Who is mainly backing the Khalistan movement? Pakistan. Operatives कहाँ पे है? यूएस एंड कनाडा. पाकिस्तान की आईएसआई रिप्रेजेंटेटिव्स इन कनाडा खालिस्तान के लीडर्स को मिलते हैं.
उनको वार्न करते हैं कि योर लाइफ इज इन डेंजर। इट इज द वन जो पास कर रहा है फंडिंग। अब पन्नून इज सिटिंग इन द यूएस, प्रोटेक्टेड बाय द सीआईए। ठीक है, उसको तो एनएसए डोवल ने क्लियर मैसेज कर दिया, वी नो इज प्रोटेक्टेड बाय द सीआईए। अब जब सैन फ्रांसिस्को में 2 अटैक हुए, उसके 10-15 दिन बाद एनआईए ने 10 फोटोज रिलीज कर दी ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड, हम्म। और उन्होंने लोगों से मांगा, ये फोटो तो यूएस के पास भी पहुंच गई है, बट द सैन फ्रांसिस्को पुलिस स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। अब जब अब जब यहां तक मिलते हैं, द अदर डे किसी यूएस यूट्यूबर ने डाला ऑन यूट्यूब, आई एम गोइंग टू ब्लो अप द न्यूयॉर्क सबवे। हम्म। उसको अरेस्ट कर दिया। ही इज नाउ हेडिंग फॉर अ 5 year जेल सेंटेंस। जी। पर यहां पन्नून कहता है, आई एम गोइंग टू ब्लो अप इंडियन एयरलाइंस। नहीं जी, यू कैन डू नथिंग टू हिम। देयर इज नो सेंटेंस ऑन हिम, देयर इज नो क्राइम अगेंस्ट सेइंग दैट। सबवे के लिए क्राइम है, इसके लिए क्राइम नहीं है। सो इट्स अंडरस्टूड दैट दैट लिंक इज देयर। द अदर लिंक, अभी टेक व्हाट हैपेंड इन रजौरी पुंछ, जो 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं, you will find a slight increase in tempo in J&K, खास तौर पे साउथ ऑफ पीर पंजाल, in the coming months. Elections are coming up in India. ठीक है, they know they cannot stop, जो अभी करंट डिस्पेंसेशन है वो वापस ही आएगा, but you can reduce its power and control. So now for all this to happen, which is the country involved, US can't do it directly. US ने कभी डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करा है, उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया है। यहां पे आसिम मुनीर है। सो वी विल फाइंड दैट देयर इज ऑलवेज एन इंटरेस्ट कि भाई किसी नेशन के अंदर एक ऐसा पावरफुल गवर्नमेंट मत क्रिएट करो which can tomorrow turn around and tell the US, go to hell, we can manage on our own. So there is always an intent. और अगर वो इंटेंट है, to give you another example to link it up with this, इस साल फरवरी में in the Munich Security Conference, George Soros mentioned Modi's links with Adani. Munich Security Conference में मोदी का link with Adani being mentioned in an open address to the conference by George Soros का कोई मतलब ही नहीं है। But 6 महीने बाद the Indian opposition made Adani a prime subject in the election campaign. So there is a big link, कोई शक नहीं है, and that is something that we have to be prepared for. ठीक है, so the involvement of Pakistan being a neighboring country. अब सेम टाइम आप ले लो, पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है? दुनिया को पता है नवाज शरीफ पीएम बन रहा है बिकॉज आसिम मुनीर वांट्स इट, बट यूएस कहता है बांग्लादेश इज सबवर्टिंग डेमोक्रेसी। पाकिस्तान को कुछ बोला है सबवर्टिंग डेमोक्रेसी? अब बांग्लादेश सबवर्ट कर रहा है, चाहे वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस करो ना करो, आसिम मुनीर तो आ ही रहा है। सर, आसिम मुनीर ने इंश्योर कर दिया नवाज शरीफ आ रहा है। दैट इज नॉट सबवर्टिंग डेमोक्रेसी। सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप कुछ दोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। सो व्हेन यू गो टू द यूएस विद एन ऑफर कि हम ये कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अब इंडिया में जिस प्रकार से उन्होंने बलूचिस के प्रोटेस्ट को रोक दिया, अगर इंडिया में यह हुआ होता, द वर्ल्ड वुड हैव कम डाउन। यूएस सीआईआरएफ, वो जो रिलीजियस फ्रीडम वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट टेल्स द यूएस गवर्नमेंट
declare India a nation of particular concern, क्योंकि कंसर्न। attempts to kill protesters or lawyers outside the country कानून का रेफर कर रहे थे। अब पाकिस्तान ने बलूच एक्टिविस्ट और रिपोर्टर्स को मारा है कीनिया में, नेदरलैंड्स में, कनाडा में करीमा बलूच को मारा है। दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। जैसे एनफोर्स डिसअपियरेंसेस हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में, ये जो प्रोटेस्ट बलूच का है अगेंस्ट एनफोर्स डिसअपियरेंसेस, उनको भी अरेस्ट किया, उनको जैसे ट्रीट किया, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान कैन ऑफर यू समथिंग, whereas India says independent foreign policy not acceptable. So it's a very interesting scenario. We need to wait and watch. तो सर ये क्या दिया होगा इसने फिर आसिम मुनीर? व्हाट कैन ही ऑफर टू द यूएस? क्या दे सकता है He's अभी? offered, he must have said, ki, bhai, whatever you want us to do to keep them under check or to keep the pressure on the current government, we can do it for you. But we will ensure it doesn't cross India's threshold of tolerance. और They are very scared of another Balakot. They're very scared of another cross-border strike because they can't retaliate. To retaliate, you need energy resources, you need बहुत munitions, कुछ ही है। you need economy. आपके पास कुछ नहीं है। और तो अगर इंडिया इज द आपने ओनली थ्रेट सर? largely India, secondly, they are providing the US with what it wants. You want arms to go to Ukraine? Pakistan provide करेगा। US manufacturing is down. US can fund Pakistan for the arms that it gives to Ukraine. करेगा। Pakistan needs spare parts for its F-16s. So रियली? it's much more than that. Now, the other thing, of course, is support to Gaza, to ensure Pakistan does nothing there to support Gaza. अब आप देखो, the Pakistan government has generally been silent on Israel. थोड़ा बहुत इधर उधर टुचमुच है, nothing otherwise. ऑफिशियली कुछ नहीं आया, बट काफी स्टेटमेंट्स टेढ़े मेढ़े से आए। छोटे मोटे individual statements which have no value. So, you see, you are providing the US with what it wants. India has refused to give arms ammunition to Ukraine. Jaishankar is there in Russia and he signed a deal for the remaining plants of the nuclear power plant there in Tamil Nadu. Naturally, ये तो बग करेगा। भाई हम तो उधर सैंक्शन लगा रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं। वो 5 दिन के लिए गए हैं So सर, कुछ समिट तो प्लान्ड है। ऑब्वियसली 5 दिन इज समिट। so naturally there is going to be ill will. जी जी। And सर ये then बताओ, you have a country which is saying, भैया हमको बताओ क्या करना है, हम तो करने को तैयार है। एज यूजुअल। सर बट ये बताओ, आई मीन देखिए, वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान का एरियाज तो जा रहे हैं सर, ठीक है, और एक जिस चीज पे मैं भी काफी एक्चुअली बिलीव करता हूँ, एक वो कर्नल रॉल्फ पीटर्स की किताब है जिसके अंदर ग्रेटर अफगानिस्तान की एरिया, जो उन्होंने पेपर लिखा था 2006 में, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ द मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान एंड द रीजन, उसके अंदर ये जो केपी का एरिया जो गया है आज इनके हाथ से, वो नहीं था, वो इट वाज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान के ऊपर भी तो एक कॉस्ट आएगा इसका। इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉस्ट फ्री फॉर पाकिस्तान। See, today what is Pakistan doing now to defend what they want to do? Unka ambassador to the UN made a statement saying we have proof that India is funding the TTP. अरे भाई साहब, जब तालिबान आया कुर्सी में तो आप लोग कह रहे थे कि इट्स ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, इंडिया इज गॉन फ्रॉम अफगानिस्तान। अब इंडिया वापस कहां से आ गया? बट देन दैट इज देयर नाउ। एज फार एज दे आर कंसर्न्ड, द टेरिटरी जो अफगानिस्तान इज क्लेमिंग, दैट इज ऑल पश्तून लैंड। जिस तरीके से पाकिस्तानीज आर ट्रीटिंग द पश्तून्स, naturally you are alienating them. अगर आप एलिनिएट करोगे, दे आर नो लॉन्गर going to be with you. अब मंशूर पश्तून को उन्होंने अरेस्ट करके they've kept him behind despite all protests.
He's a very powerful figure. Now with the bargain, what is happening is जो आपका limited hold control है पश्तून्स के ऊपर वो भी खत्म हो रहा है. Now, how much can you suppress a population which is moving in the opposite direction? Till now, the Pashtuns neither supported the TTP nor the Pakistanis. All they wanted was peace. अब आपने उनको रगड़ना शुरू कर दिया. And you have to realize that when the TTP rose, it was because of Musharraf's attack on the Lal Masjid, जिसमें 100 से ऊपर पश्तून्स मरे थे. जी. It is that which led to anger against the Pak government. Otherwise, they were fighting for the Taliban against the Soviet occupation Yeah. Yeah. or against the US forces. I'm forgetting the period of time. But नहीं, लाल that मस्जिद तो is, अभी है सर, यूएस फोर्सेस थी ना no, उस टाइम पे. Lal Masjid was, I think, 2000. Sorry, it was against the US forces. They were जी. fighting for the Taliban against the US forces, but they switched against the Pak army because of the Lal Masjid attack. अब आपने जी. इनको alienate कर दिया है. Automatically they will be more pro TTP, they will be anti Pak army और भी बढ़ेगा. All they wanted was peace. आपने वो तो दिया नहीं. So things are only going to get back to us. And that is the way Pakistan, now Baloch ne to वैसे भी they've made their life hell. So if you look at it, both sides they are in trouble. सर कुछ तो सोचा होगा. आई मीन यू नो व्हेन पता है वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू सी इज कि यार कभी कंट्री कोई एक स्टेप लेता है, दे थिंक अबाउट इट. तो मैं ये सोच रहा, आपसे पूछ रहा था कि यार कुछ तो सोचा होगा ये कुछ करने से पहले, बट देन आई सडनली दैट थॉट केम इनटू माय हेड, यार तो खुद ही बोलता है ये सोचते नहीं है, तो फिर क्या पूछ रहा है इसके अंदर. सो यू कैन See, the इमेजिन point is, एन एनालिसिस कनंड्रम. the problem there is you are looking at dealing with the crisis today, not its impact years later. हम्म. When you deal with the crisis today, आप action लेते हो to try and suppress the crisis today. You जी. are not looking at it as to what is going to be the impact in the years ahead. If you were to look at how the impact would be in the years ahead, you would have taken these steps much before. You would have possibly won over the populace so that you could reduce the base of the TTP. आप वो नहीं कर पा रहे. So without having reduced the base of the TTP, how do you expect to get peace into the region? अब आप गिलगित बाल्टिस्तान में देख लो, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं. Where are there no protests in Pakistan except Punjab? Nobody is happy. How long can you hold a state which has got so many different entities all pulling in different directions, all having different ambitions and hopes of their own? कब तक आप इनको खींच के दबा के रखोगे? दैट इज ट्रू सर. बट यू नो अगर आप इस आर्मी के स्ट्रक्चर को देखें सर, ये लोग आसिम मुनीर के पीछे, तो आसिम मुनीर हैज पकड़ तो लिया है इसने. नाउ व्हेन यू लुक एट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू विद अफगानिस्तान, ये वो जो भी है वो ही इज डूइंग, बट टीटीपी के जो रिलेंटलेस अटैक्स हैं सर, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें 4-5 दे डोंट लूज. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पाकिस्तान कैन टेक दीज लॉसेस सर? That is the point, is that a time will come and they will retaliate. And they will retaliate in Afghanistan. If they've done that without support from the world, is going to make it worse. And the second point, Afghanis are not going to take it lying down. They've faced enough, chahe the Soviets, chahe the US. For Pak to be able to succeed there is going to be very difficult unless it वेरी. breaks the government in Taliban and it separates the people there, which it is trying, but it won't succeed. The unity within the Taliban government आसानी से टूटेगा नहीं, though they're trying very hard to break it. They're trying to pull the Haqqanis on one side, the Talibs on the other. It's not an easy action.
All said and That done, is. the country is still together. हम्म। सर आते हैं बलोचों पे। आई मीन हाउ डू यू सी द बलोच प्रोटेस्ट जो आई मीन अमेजिंगली इट्स लेड बाय अ वुमन, फायर ब्रांड वुमन। वो बेचारी इतना चिल्ला के इतना बोल के उसकी आवाज ही बंद हो रही है लिटरली व्हेन शी इज गिविंग इंटरव्यूज नाउ। हर वॉइस इज सो bad because she's not able to, she's been screaming and shouting, but there's no recognition, there is no protest, there is no New York Times, there is no Washington, कुछ नहीं है। तो ये क्या है सडनली, एंड बलोच क्यों खड़े हो गए? हैव दे सीन सम सॉर्ट ऑफ अ वीकनेस विद इन द पाकिस्तानी स्टेट? See, the reason basically is आप कितना push करोगे? As the Pak state, you have been pushing and pushing and pushing. You've been making it so difficult that ultimately someone had to take the step. हम्म। Pehle it was small steps. The Pak government pressure lagata, the people would run away abroad. Karima Baluch is an example. There are many more like her. हम्म। And they would operate from there. जी। After the Pashtun, जब Manshoor Pashtun came into play, there's a realization that ये अंदर होना जरूरी है. And they have gone through the worst. I mean, throughout this period, they've been on the roads. It's been hundreds of days. They've come in, they've been arrested, they've been beaten, they've been treated as dirt, but they refuse to back down. Now, if the state doesn't wake up, if now it doesn't wake up, this peaceful movement, if it turns violent, can be something which will be very, very difficult to break. Surprisingly, why is the world silent? They feel Pakistan is a state that they can exploit. और हो रहा है. Up today now, if you think China can come into Gwadar and the Baluches will be quiet, हाँ। they will be hell to pay. But the fact is that there is bound to be a retaliation from the Baluch side, and it is going to get worse because the way they are handling them, the Baluch Liberation Forces, unko BRA, that grouping that is there, it's only going to get stronger. Usko itne log mil jayenge, they won't be able to manage it. So things are going to get worse unless the Pak government wakes up. बलोच पे सर आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। इज दैट क्रिटिकल मास की बात करते हैं काफी लोग, बलोच में नहीं है क्योंकि देयर इज नॉट मच पॉपुलेशन, ये वो एंड ऑल दैट, बट बलोचों के पास एक चीज है जो उनके पास पहले नहीं थी, इज द लिंक विद टीटीपी, एंड वहां पर उनके फाइटर्स और ये सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दैट इज गोना गो फॉरवर्ड? ये क्या ये मूवमेंट वायलेंट हो सकता है? See, Baloch and the TTP today share the same weapons जो US छोड़ के गया है. जी। They have got it from Afghanistan. Baloch also have their links across the border. They are secure. The TTP is aware, the Baloch are aware कि अकेले they may not be able to achieve. Together they can do wonders. हम्म। TTP is not interested in the whole of Pakistan. It wants its own area, which it wants to, the erstwhile Northwest Frontier Province, which it wants to make into a Sharia state just like Afghanistan. Simple. Baloch want their freedom away from Pakistan. The Baloch movement is fairly active abroad. The Pashtun movement is not so active abroad. हम्म। अब देखो, Geneva में the Baloch will have a permanent protest. New York में they will have a permanent protest. कहीं भी देखो, you will find that they are protesting and they have the power. जी जी जी। Population is about a fifth of Pakistan. The region is almost a third of Pakistan. But the fact is, इतना suppress किया है, इतना इनको deny किया हुआ है, that the anger within is more than enough to change the entire environment. Which is where is a problem as far as, because terrain इनको पता है. Their tactics are hit and run, IEDs,
They're hitting Pak columns. They're not attacking Pakistan post as a TTP kar raha hai. But they've made life hell for Pakistanis in Balochistan. True. So it is not going to be easy to get the whole thing under control. Jab tak they change the overall concept and tactics. And if it gets worse, if they maltreat the protesters and if there is some other incident, you have to remember the last Baloch uprising jo hua tha, that was because a Baloch doctor was raped by a Pakistan army captain. Hmm. And that led to an uprising, which went worse because Pakistan refused to act. Yeah. Now you do something stupid here and there are deaths. You can imagine the sort of uprising which will take place. And finally, sir, how do you see Saeed, Hafiz Saeed? So irrelevant that I've forgotten his name also, but how do you see him standing for his family or whatever, him being He's, connected with the he's elections? always stood for elections. Hmm. I don't think he's ever come anywhere within range. He has tried, he is now, Pakistan is also trying to shift him from being a terrorist head to a political leader. But interestingly, उसके ऊपर bounty है. He's a global terrorist. Yeah. And a global terrorist can only stand for elections in a terrorist state. He cannot stand for elections in a democratic state. Yeah. Can you expect I mean, any known terrorist in India? Can you expect Pannoon or any other known terrorist, anyone whom Amrit Pal Singh here standing for elections? But it happens only in Pakistan. A Hmm. global declared terrorist with $1 million bounty on his head, roaming free, and now going to be giving political speeches. And Pakistan will claim वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में. ना But जी, all हमारे को this तो है is नहीं. drama because they are trying to display that he is not a leader of a terrorist organization. He is a leader of a political group. चाहे उसको वोट 10 मिले, but he stood for elections. Imagine Imran Khan will be debarred from standing for elections. But Hafiz Saeed will get the same, will be given permission to stand for election. What a country. One can't say anything beyond that. So that is Pakistan for you. Sir, thank you so much. As always, a pleasure learning from you. And I hope to see you back in the new year. And wish you the best for that time, sir. Thank And see you. you again. Take care and all the best to you and those who follow you. All the best. Happy New Year. Take care. Be safe. Jai Hind, Jai Bharat, sir. Jai Hind. Bye.